Technology. Unit 1 is Mathematical Foundation for Blockchain. The contents we will be discussing in this unit are cryptography and cryptographic hash function. Under cryptography, there are three subtopics, which is symmetric key cryptography, asymmetric key cryptography, and elliptic curve cryptography. Whereas the topic under cryptographic hash function are SHA-256, digital signature algorithm, and Merkle trees, and all this topic will be discussed in the further slides. So, what is cryptography? In today's world, a large amount of data is generated, collected, and analyzed, and also delivered in digital format. So, attackers or hackers are focusing on computer system and open channels of the communication to acquire the sensitive data. So, for the protection of this data, cryptography is used. Cryptography is the art of protecting the information or the data by transferring it into an unreadable format. Is called cryptography. So what does the cryptography do? It does two functions, which is encryption and decryption. So first, your original message, say hello, is encrypted by the sender and converted into an unreadable format, and then this unreadable format is sent through the channel, insecure channel, and using the decryption key at the receiver end, it is again converted from the ciphertext, that is an unreadable format, to an readable format, which is hello. The basic terminologies of cryptography are plain text, which is the original message, which is human readable, or the data that needs protection. Let's say example, hello. Ciphertext is a scrambled or unreadable message after the encryption. Let's say this is the ciphertext or the scrambled message of hello. Then come encryption. So it is a process of converting a plain text, which is the original message, into a ciphertext, which is an unreadable format, using algorithms and key. And decryption is a reverse process of encryption, where the ciphertext is back converted into the original text. Key is a secret key, which may be a number or a string, used in encryption and decryption process. And there are two types of cryptography. First is symmetric key cryptography, and second one is asymmetric key cryptography. So we will be discussing about this both in the further slides. So why is cryptography important? So basically, there are many reasons, but the main four reasons are: first, confidentiality. That means to protect the data and communication against unauthorized access and disclosure. Second is authentication. Authentication means only authenticated user have the access to the data, and for that we use many cryptographic techniques like MAC and digital signature, which we will be studying in the further slides. To provide verification so and non-reputation means a sender who cannot refuse to acknowledge, or who cannot refuse that he or she has not sent the data. It is non-reputation. So symmetric key cryptography. Symmetric key cryptography is the simplest encryption technique where only one key is used for encryption and decryption. It is also called secret key cryptography. So so as same key is used, the sender and receiver have to share the secret key through a secure external mean. First, so what is the working? First, the sender encrypts the message using his own copy of the secret key. The ciphertext is generated and sent to the receiver over the communication channel. The receiver decrypts the ciphertext using his own copy of key, and using the decryption, message is converted back into the original message, which is a readable format. There are different types of examples of symmetric key cryptography. Data encryption standard, which is DES, and advanced encryption standard. So this is a diagram representation of symmetric key cryptography. The plain text is encrypted using the same key, and the encrypted message is sent through the insecure channel. Again, using the same key for decryption, the plain text is generated. Asymmetric key cryptography, as the name suggests, it is a
it uses two types of key, like first one is a private key and the other one is a public key. So it is also called a public key cryptography, where the receiver and sender use different keys, but these keys are interrelated to each other. One key is public key and the other one is called a private key. So each public key is published and corresponding private key is kept confidential. So the public key is publicly available to all the people, and private key is only kept confidential. So how it works: sender first encrypts the message using the receiver's public key, and we have to keep in mind here the keys used are from the receiver, like the receiver's public key and private keys are used. So first the sender encrypts the message using the receiver's public key. The public key of the receiver is publicly available. Encryption converts the message into ciphertext, and the ciphertext is then sent to the receiver over the communication channel. Ciphertext can be decrypted using receiver's private key. Now this is a diagram representation. So what happens here is that the message from the sender is first encrypted using a public key, which is of the user. Then the ciphertext generated is sent through the insecure channel. At the receiver side, the ciphertext is decrypted using the receiver's private key and then converted into again the original text, which is a readable text. The difference between symmetric key cryptography and asymmetric key cryptography is that in symmetric key only one key is used, whereas in asymmetric two keys are used. It is faster as only one key is used for encryption and decryption. It is slower as it requires more computation. It is less secure as key distribution is difficult. It is more secure as a shared openly and private key remains secret. Here the key size are smaller, like 128 or 256 bit. In asymmetric key cryptography, larger key size are used, which is 2048 or 4096. Examples are AES, DES in symmetric key, whereas in asymmetric key RSA, ECC and DSA. Then encrypting symmetric key cryptography is mostly used for encrypting large amount of data, as it is faster. So for large amount of data it is more beneficial, whereas for asymmetric key cryptography, secure key exchange digital signature and certificate in that asymmetric key cryptography is used. So what is elliptical curve cryptography, which is also called ECC? So it is a public key cryptography technique based on mathematics of elliptic curves over a finite field. So main idea is the security relies on the difficulty of solving the elliptic curve discrete algorithm problem. So it is based on an elliptic curve that can be used to create faster, smaller and more efficient cryptographic keys. So it is an alternative to RSA. How it is an alternative to RSA we will be discussing in the further slide, as we have the difference between both. And it is based on the latest mathematics and delivers more secure foundation than the first generated key. So it is used to perform critical security function including encryption, authentication and digital signature. So the equation to get the keys, we use elliptic curve equation over a finite field. So the equation is y square equal to x cube plus ax plus b, where a and b are the constant which define the shape of the curve and x, y are the points on the curve, and the keys are generated by making the use of elliptic curve equation. So in ECC, private and public keys are generated. So for private key, it is very simple to generate it, as we have to only select or produce a random number between a specific range, making it highly quick. And for public keys within ECC are the EC point, which are the pair of integer coordinates x and y that lies on the curve. Difference between ECC and RSA. So ECC
Security basic, it uses elliptic curve discrete logarithm problem, whereas in RSA factorization problem is used. The key size in ECC are much smaller than the key size in RSA. As the key size are smaller in ECC, the faster encryption decryption is faster, whereas in RSA it is slower. um, as the computation is faster, the speed is faster, it requires less storage and bandwidth due to shorter keys. And whereas in RSA, as the key size is large, more memory and bandwidth is used. ECC is highly efficient, suitable for small devices like mobile IoT devices, whereas RSA is used on resource constrained devices. Security grows rapidly with the key size, and here the security grows slow with the key size. Applications: ECC is used in modern SSL, TLS, blockchain, cryptocurrencies, IoTs, whereas RSA is widely used in legacy system, digital signatures, etc. So what is cryptographic hash function, which is the second topic of our unit? So what is cryptographic hash function? It is a hash function that takes random size of input and always produced a fixed size of output. So there are several properties of hash function. So first is deterministic. That means a same message always result into a same hash. Second, it is quick. Computing a hash value is very quick. Avalanche effect, that is, a minor change in the input will reflect or result in a drastically or major change in the hash value. It is a one-way function, that is, the reverse operation is impossible, and collision resistant, that is, it is infeasible to find two different messages that will produce a same hash value. Resistance, as it shouldn't be predictable from the given stringent and vice versa. That is, hash value cannot be predicted from the given input, and vice versa, like from the hash value we cannot predict the input. Then second, pre-image resistance, that is a given as an input, it should be difficult to find another. If a input is given, then it is difficult to find another input that will have the same hash value as the given input. So this is the diagram how it works. Like, a plain text is passed to the hash function, and then a hashed text is generated, and this is a one-way function. It is not like encryption, that using a decryption key the original text can be generated. In hashing algorithm, once a plain text is converted, it is very much impossible to convert it again, like back convert it into the plain text. Message digest. So it is a cryptographic hash function containing strings of digit created by a one-way hash function. It is same like cryptographic hash function, where any length of input is given and will always produce a fixed length of output. Regardless of the size of the input, the message digest will always produce a numerical representation of the fixed size of hash. It creates a compressed image of a message and is called as digest. So it is used for integrity of the message transmitted over an insecure channel. It is a one-way function. The function is practically infeasible to invert. Digest is encrypted with sender's private key, called as digital signature, which can only be decrypted by the receiver, who has the sender's public key. The receiver can authenticate the sender and also verifies the integrity of the sent message. So basically, this hashing algorithm, message digest, all this are used basically for integrity checking, verifying the integrity of the message and authenticity of the message. And this we will discuss in the further slides. So this is the diagram representation where Alice is a sender and Bob is a receiver. So what happens is that the message is first hashed and the digest is generated. Then the message and the digest both are together sent through the insecure channel to the receiver.
At the receiver side, the message is taken. It is again hashed through the same hash function at which was used at the sender side, and both the generated hashed value and uh, the generated digest and the received digest is compared. If they are same, then it means that the integrity is maintained and the digest is kept, whereas if it is different, then it is discarded. Secure hashing algorithm. So SHA-256 is secure hash algorithm having 256 bit. It is a cryptographic hash function from SHA-2 family that produces a fixed hash value of 256 bit, which is 32 byte hash value. So what is the input? Input में हम कोई भी length of input दे सकते हैं, like any length of input we can give, and it will always produce a 256 bit of output. It is again irreversible, like it is a one-way function, and the original text cannot be retrieved from the hash value. Collision resistance मतलब दो input extremely unlikely to produce the same hash, in which ensures data integrity. Whereas application, it is used in blockchain, digital signature, password hashing, verifying the file and integrity. So how it works? सबसे पहले होता है message pre-processing, where the input is first converted into binary, and वो जो binary होता है हमें उसको padding देनी है, so that we can form a length which is a multiple of 512 bits. After the padding is done, a message is passed. That means the padded message is divided into 512 bit of block. Then each 512 bit blocks are further divided into 16 words of 32 bits each. Then message expansion, where 16 words are expanded into 64 words with logical functions like XOR, shift, etc. Initialization, where 8 fixed initialized values from H0 to H7 are used, and 64 round constant which is K0 to K63. कंप्रेशन फंक्शन, जहाँ पे हर वो 512 बीट ऑफ ब्लॉक को प्रोसेस किया जाता है इन द 64 राउंड, लाइक ईच ब्लॉक को हम 64 राउंड्स में लेते हैं, एंड इन एवरी हर राउंड के अंदर हम एक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं विच आर एंड और एक्स और मॉड्यूलर एडिशन शिफ्ट रोटेशन, इन सब को हम अप्लाई करते हैं एंड आर अप्लाइड विद कॉन्स्टेंट वर्किंग वेरिएबल्स. देन हैश वैल्यू अपडेट आफ्टर, जब सारे 64 राउंड्स होते हैं, लाइक सबसे पहले राउंड लाइक K0 में वो सारे राउंड्स होंगे, फिर K1 में होंगे, K2 में होंगे, ऐसे करके जब सारे 64 राउंड्स कंप्लीट हो जाते हैं तो रिजल्ट को, जो भी रिजल्ट आया होता है हर ब्लॉक का, उनको ऐड किया जाता है एंड प्रोसेस रिपीट्स फॉर अदर ब्लॉक, एंड वही प्रोसेस रिपीट होते हैं सारे 512 बिट ऑफ ब्लॉक के लिए. फाइनल आउटपुट में क्या होता है? द कॉन्कैटिनेशन होता है H0 से H7 जो भी प्रोड्यूस्ड है उनकी कॉन्कैटिनेशन होता है, जो रिजल्ट करता है इनटू 256 बिट का फाइनल हैश वैल्यू. वो एक यूनिक फिंगरप्रिंट रहता है. डिजिटल सिग्नेचर. So digital signature basically authentication and verification purpose. So digital signature works on public key cryptography architecture. So यहाँ पे क्या होता है? Digital signature, the signature is encrypted using the private key of the sender and decrypted using the public key of the sender. So यहाँ पे basically sender की public and private key इस्तेमाल की जाती है because we have to authenticate and also maintain the integrity. So basically integrity के लिए तो hash function का इस्तेमाल किया जाता है, पर mainly for authentication हम sender की public and private key का इस्तेमाल करते हैं. सो इट इज़ बिकॉज कि इफ़ हम एक सेंडर की प्राइवेट की से एनक्रिप्ट कर रहे हैं तो रिसीवर में भी हम सेंडर की पब्लिक की को यूज़ कर रहे हैं. इफ़ सही सेंडर ने उसकी सही प्राइवेट की से अगर एनक्रिप्ट किया है तो रिसीवर को समझ जाएगा इफ़ वो डिक्रिप्ट हुआ तो कि सही वाले यूज़र से मैसेज आया है, ऑथेंटिकेटेड यूज़र से मैसेज आया है. सो इससे हम बता सकते हैं कि ऑथेंटिकेटेड यूज़र ने मैसेज भेजा है.
सो बेसिकली यहाँ पे स्टेप्स ये होते हैं कि सबसे पहले मैसेज को पास किया जाता है टू द हैश फंक्शन डिनोटेड बाय एच हैश टू क्रिएट द डाइजेस्ट। सबसे पहले डाइजेस्ट क्रिएट किया जाता है। देन सेकेंड है मैसेज और डाइजेस्ट दोनों को बंडल करते हैं एंड एनक्रिप्ट करते हैं यूजिंग द सेंडर्स प्राइवेट की। सो प्राइवेट की को हम यहाँ पे हम सेंडर के प्राइवेट की को साइनर्स प्राइवेट की बोलते हैं एंड उसको फिर इनसिक्योर चैनल से भेजा जाता है। एट द रिसीवर साइड क्या होता है, उस एनक्रिप्टेड मैसेज को मैसेज एंड डाइजेस्ट को हमें डिक्रिप्ट करना है यूजिंग द सेंडर्स पब्लिक की। उसके बाद जो हैश वैल्यू होगी उसको तो हम ऐसे ही रखेंगे, पर जो डेटा होगा उसको फिर से हैशिंग फंक्शन से पास करके डाइजेस्ट क्रिएट किया जाएगा एंड बोथ द डाइजेस्ट आर कंपेयर्ड कि वो सही है या नहीं है। तो यहाँ पे इंटीग्रिटी चेक होती है। सो यहाँ पे डायग्राम के बेसिस पे देखते हैं, साइनर है और एक वेरीफायर है। सो डेटा को सबसे पहले हैश फंक्शन से पास करके हैश क्रिएट किया गया है। दिस हैश को एंड डेटा को हम सेंड करते हैं थ्रू द सिग्नेचर एल्गोरिथम एंड यूजिंग द साइनर्स प्राइवेट की हम एनक्रिप्ट कर रहे डेटा एंड सिग्नेचर को। एट द रिसीवर साइड हम उसको डिक्रिप्ट कर रहे यूजिंग वेरिफिकेशन एल्गोरिथम एंड साइनर्स पब्लिक की। सिग्नेचर को कैप्ट ऐसे ही रखा जाता है, उससे वो हैश वैल्यू जनरेट होती है एंड जो तुम्हारा डेटा है उसको हैशिंग फंक्शन से पास करते हैं एंड इफ दोनों हैशेस आर इक्वल देन इंटीग्रिटी इज मेंटेन्ड। सो डिजिटल सिग्नेचर इंश्योर करता है द ऑथेंटिसिटी ऑफ द यूजर ऑफर नॉन रिप्यूटेशन, लाइक यूजर डिनाई नहीं कर सकता एक बार वो पब्लिक की से वो डिक्रिप्ट हो गया, मतलब पता चल गया कि इसी सेंडर ने भेजा है, तो ही कैन नॉट डिनाई और शी कैन नॉट डिनाई कि हमने ये भेजा ही नहीं था। इट प्रोवाइड सिक्योरिटी, improves efficiency and enhance compliance. डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम। सो डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम ये एक प्रोसेस है, क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक है यूज टू वैलिडेट द ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द मैसेज, सॉफ्टवेयर और डिजिटल डॉक्यूमेंट। सो डिजिटल सिग्नेचर मतलब वो डॉक्यूमेंट होता है जो साइंड होता है, लाइक साइनर्स एल्गोरिथम से पास होके। बट डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम ये पूरा प्रोसेस है, ये सेम प्रोसेस है जो अभी हमने पढ़ा एंड ये पूरा प्रोसेस है कि कैसे सेंडर से रिसीवर तक चीज़ें जाती हैं, डेटा जाता है। सो बेसिकली इंश्योर करता है ऑथेंटिकेशन ऑफ द सेंडर, ये हमें इंश्योर कराता है दैट इंटीग्रिटी, दैट मीन्स द डेटा इज़ नॉट ऑल्टर्ड जब भेजा गया हो बिटवीन द ट्रांसमिशन, एंड इट नॉन रिप्यूटेशन को भी इंश्योर करता है, लाइक सेंडर कैन नॉट डिनाई हैविंग सेंड द मैसेज दैट ही और शी हैव सेंड द मैसेज। सो इट इज़ यूज्ड इन डिजिटल सिग्नेचर्स, सर्टिफिकेट्स, गवर्नमेंट बेस्ड एंड ID वेरिफिकेशन, कोड साइनिंग एंड सॉफ्टवेयर, इन सब में ईमेल सिक्योरिटीज़ में भी यूज़ किया जाता है, ब्लॉकचेन में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में यूज़ करते हैं। सो इन पब्लिक एंड ये भी पब्लिक प्राइवेट की पेयर का यूज़ करता है एंड द की पेयर इज़ डिफरेंट फॉर एवरी सिग्नेचर। द प्राइवेट की इज़ रेफर्ड एज अ साइनर्स एज अ सिग्ने, प्राइवेट की को हम सिग्नेचर की बोलते हैं, वेरएज पब्लिक की को हम वेरिफिकेशन की बोलते हैं। सो ये सेम है, वही चीज़ें, साइनर है और वेरीफायर है। डेटा को फर्स्ट वी हैश वैल्यू को एंड डेटा को साइनर्स एल्गोरिथम एंड साइनर्स प्राइवेट की मदद से एनक्रिप्ट करते हैं। द एनक्रिप्टेड डेटा इज सेंड at the receiver side, it is decrypted using verification algorithm and signers public key, and the data is again hashed using the same hash function, and if the hashed value generated and received दोनों equal है, then the integrity is maintained. Merkle tree. So Merkle tree is also called a hash tree. It is a fundamental पार्ट ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये काफ़ी मदद करता है इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड इट इज़ अ बाइनरी स्ट्रक्चर यूज टू एनक्रिप्ट द ब्लॉकचेन डेटा मोर एफिशिएंटली एंड सिक्योरली। सो ये एक तरह से ट्री स्ट्रक्चर होता है, बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। बाइनरी इसके लिए क्योंकि इसके जो चाइल्ड्स होते हैं वो एग्जैक्टली 2 होते हैं, लाइक हर नोड को एग्जैक्टली 2 चाइल्ड्स होते हैं। सो यहाँ पे जो लीफ नोड होती है उनके अंदर हैश होता है ऑफ द डेटा, एंड जो नॉन लीफ नोड्स होती है, मतलब जो इंटरनल नोड्स होते हैं, वो कंटेन करते हैं द हैश ऑफ इट्स चाइल्ड नोड। सो ये रिप्रेजेंट करता है द समरी ऑफ ऑल द ट्रांजिशन इन द डेटा।
and it provides a means to maintain the integrity and validity of the data. So Merkle trees are created by repeatedly calculating the hashing pairs of the node until there is only one hash left. So सारे चाइल्ड नोड से स्टार्ट करके हम हैश कैलकुलेट करते हैं, उनको ऐड करते हैं, एंड ये तब तक किया जाता है जब तक हमें एक हैश वैल्यू नहीं मिलता है, जिसको हम रूट हैश या Merkle root बोलते हैं. So every leaf is hash of a transitional data, and non-leaf node is a hash of its previous hashes. So इसका जो अप्रोच होता है वो बॉटम अप अप्रोच होता है. So binary होता है, so it requires a even number of leaves. If odd numbers of transaction है तो duplicated ones को create किया जाता है. So how it works, हमारे पास suppose 4 transaction है. सो इन ट्रांजैक्शन का हैश क्रिएट किया जाता है. सो हैश 0, हैश 1, हैश 2, हैश 3, दीज आर द लीफ नोड्स. फिर हैश 0 एंड हैश 1 को कॉन्कैटिनेट करके हैश 01 बनाया जाता है. सेम ईयर हैश 2 एंड हैश 3 को जनरेट करके हैश 2, 3 बनाई जाती है. एंड कॉन्कैटिनेटिंग हैश 01 एंड हैश 2, 3 Merkle रूट, मतलब एक अब हैश ही बचा विच इज हैश 0, 1, 2, 3, तो वो जनरेट किया जाता है. सो बेसिकली फिर इससे हमें चारों ट्रांजैक्शन का एक ही ट्री के अंदर पूरी समरी आ गई है. थैंक यू.